Question number 12. The ratio of the sum of m and n terms of an AP is m square ratio n square. The ratio of sum of m term and n term. So what is the sum of first n term? So let's assume let first term of a AP is a and common difference of an AP is small d. So here we are given the ratio of sum of m term to sum of n term. So sum of first m term of an AP is it's a m by 2 2a plus m minus 1 into d. This is sum of first m term. We are given the ratio of sum of m term and n term. So sum of n term is our formula n by 2 2a plus n minus 1 into d. So this is sum of m term, this is sum of n term. Now what we are given, ratio of sum of m term to n term is given. So now given ratio of these two terms is given, sum of n term to sum of n term. This ratio is given. What is given? It's a m square ratio n square. So ratio is represented by fraction. So it's a m square upon n square. This is given. This is given. So that means now we have to prove. What we have to prove? So that the ratio of mth and nth term, ratio of the mth and n term. So mth term is am and nth term is an. So we have to prove ratio of this m term to n term is 2m minus 1 upon 2n minus 1. This we have to prove, है ना, ये प्रूव दैट है, ये आपको प्रूव करना है. Sum of first m term and n term is given. We have to find the ratio of this mth term and nth term. Clear what is given? So let's start with given. So here s of m and s of n, sum of n term and sum of n term is given. These two equations are there. Put this value. Sum of m term is m by 2 2a plus m minus 1 into d upon n term n by 2 2a plus n minus 1 into d. This is equal to m square upon n square. Clear? Now simplification. This 2 can be cut. Here m and m square is there, so this m will go into division. So 1 power of m will be cut. Similarly, n and n square is there, so here 1 power of n will be cut. Done. So remaining terms are 2a plus m minus 1 into d upon 2a plus n minus 1 into d equal to m by n. Now perform cross multiplication. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसका. So this n will multiply this 2a, so it's a 2an into n into m minus 1 d. Now this term will multiply this m, so it's a 2am plus m into n minus 1 into d. So here further simplification. So combining these two terms, taking this 2am in the left hand side, taking this 2am in the left hand side and this term on the right hand side. So here we can take 2a common. So 2a common, so n minus m equal to here we can say this d is common. So taking d common, remaining terms are m n minus 1
this will go into the right hand side. It's a minus n into m minus 1. Clear, students? Perform expansion over here. So this will n minus m into d. Here expansion mn minus m, mn minus m minus nm plus n. So this minus nm plus nm cut. This will be n minus m. So here we are getting 2a 2a n minus m equal to d, and here remaining terms are n minus m, d into n minus m, n minus m. Again this n minus m will be cut. So what we are getting here, we are getting value of d, and that value of d is 2a. Common difference is 2a. Clear? Now what we have to prove? We have to prove the ratio of this m term and n term. So let's start with this m term and n term. So now ratio of the m term upon ratio of the n term is equal to, this is our left hand side, we will derive this right hand side. So what is m term? Formula is an. So it's a plus m minus 1 into d. This is mth term, and for the nth term it's a plus n minus 1 into d. Done? This is our formula, and here we are putting the value of this d. What is the value of d? Value of d is 2a. So m minus 1 into 2a upon a plus n minus 1 into 2a. Open this bracket. So it's a plus 2am minus 2a upon this one is a plus 2an minus 2a. So it's a 2am, a minus 2a. What is a minus 2a? Minus a. It's a 2am minus a upon this one is 2an minus a. Here you can take a common. It's a 2m minus 1. Denominator again a common. It's a 2n minus 1. This a will be cut. So this is equal to your required right hand side. 2m minus 1 upon 2n minus 1. Done. This is our right hand side. Here we have started from left hand side. So this we have to prove. Clear, students? Simple sum. Students, okay, now next question. Next question is question number 13. So for this 13 number, if the sum of n term of an AP is 3n square plus 5n, sum of n term, है ना, तो डायरेक्ट लिख सकते हो आप, sum of n term of AP. So that is given. Sum of n term of an AP is 3n square plus 5n. Sum of n term. Sum of first n term of AP is 3n square plus 5n, and its mth term means am. Mth term of an AP is 164. Find the value of m. तो ये जो 164 है ना, कौन से नंबर की टर्म है? तो प्लीज फाइंड द वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ टर्म. नंबर ऑफ टर्म्स मीन्स कौन से ऑर्डर ऑफ द टर्म, कौन से नंबर की टर्म है वो आपको फाइंड करना है. डन. ये वाला लॉजिक हमने पहले यूज किया था, अगर किसी को याद है तो बता सकते हैं. So here Sn is given. Given Sn is 3n square plus 5n. से रिजल्ट 1. हमें mth टर्म an निकालना हो तो an मिलेगा. कैसे मिलेगा? ये हमने यूज किया था पहले एक बार. Sn minus 1 करना है. Sum of n term minus sum of n minus 1 term. So we are getting nth term.
Then we'll convert our nth term into mth term and we are getting the value of m. Done? So Sn is given. Now we'll find S of n minus 1. Sn minus 1. Sn minus 1 is nothing but the 3 into, जहाँ पर n होगा वहाँ पर n minus 1 रखना है. So 3 into n minus 1 whole square plus 5 into n minus 1. Clear? Simplify करो थोड़ा. So this will be equal to 3 n minus 1 square. It's a n square minus 2n plus 1 plus 5n minus 5. So what is our S of n minus 1? S of n minus 1 is 3n square. 3n square minus 6n plus 3 plus 5n minus 5. So S of n minus 1 is 3n square minus n minus 2. This is S of n minus 1. This is S of n. Done? So now we are getting our an. So what is an? Formula: nth term is nothing but the sum of n term minus sum of n minus 1 term. Sum of n term is given, n minus 1 term we have derived in our result number 2. So this is equal to 3n square minus 5n minus S of n minus 1, which is 3n square minus n minus 2. So our nth term is, open this bracket, 3n square minus 5n minus 3n square plus n plus 2. Sign will be changed. Minus 3n square plus 3n square cut, minus 5n plus 5n है ना. So plus 5n plus n, it's a 6n plus 2. It's a 6n plus 2. This is our nth term. Value of the nth term is 6n plus 2. Listen carefully. Value of the nth term is 6n plus 2. So what is the mth term? So here we can write mth term is, बोलो क्या होगा? If nth term is 6n plus 2, what is mth term? It's the 6m plus 2. Done? And value of the mth term is given. What is given? We are given in the question. Value of the mth term is 164. So this one is 164. 164. Find the value of m. मिल जाएगा. Linear equation in one variable. Standard 8, chapter number 2. So 6m equal to 162. So here dividing 162 by 6. अब कहाँ से मिलेगा? 27. है ना? 27 6 162. So m equal to 27 is the answer. Done? ये समझ में आ गया सबको? चलो. Now question number 14. So here question number 14 is there. Insert 5 numbers between 8 and 26. Insert 5 numbers between 8 and 26 so that the resulting sequence is an AP. Resulting sequence is an AP. तो 8 और 26 के बीच में आपको 5 नंबर इंसर्ट करने हैं. So let's assume that 5 numbers and the resulting sequence is an AP. So we are assuming 5 numbers. So let's A1, A2, A3, A4 and A5. These are the 5 numbers. These are the 5 numbers between 8 and 26. Be the 5 numbers between 8 and 26 so that resulting sequence is an AP. तो हमारी AP क्या आएगी ना? रिजल्टिंग सीक्वेंस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होनी चाहिए. तो क्या होगी? 8 और 26 के बीच में एंटर कर रहे हैं नंबर्स ये.
तो फर्स्ट नंबर हमारी जो फर्स्ट टर्म होगी वो 8 होगी। यस। और नंबर्स कौन से नंबर इंसर्ट कर रहे हैं? A1, A2, A3, A4, A5, ये 5 नंबर्स हमने इंसर्ट कर दिए। किसके बीच में? 8 और 26 के बीच में। तो दिस इज अवर AP। डन। इन दिस AP, दिस इज अवर फर्स्ट टर्म, है ना, T1 बोल सकते हैं आप इसको। दिस इज अवर सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, एंड दिस वन इज अवर लास्ट टर्म। T7 is 26. So from this AP, what we can write? हमारे पास कितना डेटा है देखो। Here from this AP we can write our first term. First term A is equal to 8. और कोई मुझे बताएगा और क्या लिख सकते हैं हम? हाँ, ए एन कौन से नंबर की टर्म है देख सकते हो यहाँ से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म 26 है ना। 7 टर्म, एन टर्म है लेकिन वो पता है वो कौन से नंबर के? 7 टर्म। ये आपको लॉजिक था पार्ट, है ना। 7 टर्म इज 26। अब इसको ए एन करके रख देंगे तो आपको पता ही है कि एन आपका 7 है, वो आपको दिख रहा है लेकिन आपको उसको विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो। क्लियर? सो हियर योर 7 टर्म इज 26। कोई मुझे बताएगा कॉमन डिफरेंस डी क्या है? हाँ, डी वन अभी नहीं मिलेगा, अभी इसको हमें फाइंड करना पड़ेगा। सो डी इज अननोन। सो लेट्स कॉमन डिफरेंस इज डी, तो पहले हम डी को डिराइव करते हैं, ठीक है, उसके बाद हमें सारी टर्म मिल जाएगी। तो बस यही लॉजिक पार्ट है कि 7 टर्म 26 है और डी आपको निकालना है। तो अभी डी कैसे निकालेंगे, इसका कोई लॉजिक देगा मुझे? हाँ, वेरी गुड, बस कुछ नहीं है, सिंपल सम। nth term is a plus n minus 1 into d. So here 7 term a7, that is a is 8 plus 7 minus 1 6, और ये d, और ये a7 हमें पता है कितना है 26। so it's a 26 minus 8 equal to 6d। 26 minus 8 18, 18 by 6 d। so now we are having common difference d equal to 3। common difference कितना आ गया? 3। Done. What is the question? Find the resulting sequence. So resulting sequence के लिए we require this A1, A2, A3, A4. So what is A1? So now we can write our A1. A1 is nothing but the A plus D, ऐसे लिख सकते हैं हम, है ना। A1 is our second term. What is second term? A2. A2 is A plus 2 minus 1. A plus D. It's A plus D. What is A? 8. What is D? 3. Say 11. सिमिलरली यू कैन राइट A2, A3, A4, A5, A6, जितना भी है वो सब फाइंड कर सकते हो। ये 6 तो नहीं है, A2 तक ही है। डन। सो A2 क्या होगा? A प्लस 2D, A प्लस 2D, A is 8 plus 2 into D, D is 3, 8 plus 6, 8 plus 6, 14. Done. Then A3, which is A plus 3D, 8 plus 3 into 3. It's a 8 plus कितना होगा? 9। This is equal to 17. A4, it's A plus 4D, 8 plus 4 into 3, 8 plus 12, that is equal to 20. And A5, A plus A plus 5D, so 8 plus 5 into 3, this is equal to 23. Done. So resulting sequence आपको लिख देना है, or you can write your 5 numbers are, that 5 numbers are 11, 14, 17, 20 and 23. Clear students? So this is how you can solve your question number 14.
चलो मोबाइल स्विच ऑफ। ये भगवान, टू एन प्लस बी रेस टू एन अपॉन a raised to n minus 1 plus b raised to n minus 1 is of arithmetic mean of a and b. This is arithmetic mean of a and b. Find the value of n. This is your question. Done? क्या बोल रहे हो? क्लियर? अभी इसका अंदर यहाँ पर एक्सपेंशन करना है। ये a को और b को मल्टीप्लाई करना है पूरे ब्रैकेट के साथ। तो a को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? इट्स a रेस टू n माइनस 1 इंटू a। तो पावर का एडिशन होगा तो क्या होगा? a रेस टू n प्लस दिस विल बी a b रेस टू n माइनस 1। a का मल्टीप्लीकेशन हो गया। Then we will multiply this b with this bracket. So it's a b into a raised to n minus 1 plus b raised to n. Done? And this is equal to 2a raised to n plus 2b raised to n. Clear students? अभी देखो यहाँ पर a b raised to n minus 1 और a raised to n minus 1 into b, ये दोनों टर्म को यहाँ पर रखता हूँ और इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ। देखो ये 2a raised to n में से a raised to n जाएगा तो a raised to n बचेगा। Here 2b raised to n minus b raised to n करेंगे तो b raised to n बचेगा। So here it's a b raised to n minus 1 plus ba raised to n minus 1 equal to a raised to n प्लस b रेस टू n। यहां तक समझ में आया? नाउ देखो अभी है ना a b रेस टू n माइनस 1, a b रेस टू n माइनस 1, उसमें से b सब्ट्रैक्ट करो, इन दोनों को साथ में रखो और a रेस टू n और a b a रेस टू n इन दोनों को साथ में रखो तो सिंप्लीफिकेशन आपका आ गया होगा। इसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन नहीं होने वाला है। डन? सो हियर a b raised to n minus 1, a b raised to n minus 1 minus b raised to n equal to this one is a raised to n minus this will be a raised to n। a raised to n को मैं आके लिखूं तो ज्यादा आपको अच्छा दिखेगा। a raised to n minus 1 into b। देखो ये लाइक टर्म है, दिख रहा है किसी को? कॉमन निकल रहा है कुछ? सो हियर b raised to n minus 1 and b raised to n कुछ कॉमन आएगा है ना? b रेस टू 3 है और b स्क्वायर है तो कॉमन क्या आएगा? जो लोएस्ट पावर होगी वो कॉमन आएगी। सो हियर वी कैन टेक दिस b रेस टू n minus 1 कॉमन। सो b रेस टू n minus 1 इज कॉमन टर्म। सो हियर रिमेनिंग टर्म इज a और हियर रिमेनिंग टर्म इज b। सिमिलरली हियर a रेस टू n minus 1 इज कॉमन टर्म और ये a बचेगा और यहाँ पर माइनस b बचेगा। क्लियर? तो ये दोनों साइड a minus b इक्वल कट हो जाएगा। So remaining terms are b raised to n minus 1 equal to a raised to n minus 1. Done? अभी पावर सेम है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं डिवीजन में ले लूँ या फिर इसको डिवीजन में ले लो। दिस इज 1 इक्वल टू a raised to n minus 1 अपॉन b raised to n minus 1। इसको डिवीजन में लिया। अभी पावर कॉमन, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 इक्वल टू a by b raised to n minus 1। यस? तो ये 1 है, कोई भी नंबर का 0 पावर 1 होगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a by b raised to 0 that is equal to 1 and this is a by b raised to n minus 1। yes or no? a by b raised to 0 is 1। ये ऐसा क्यों किया? इसको कंपेयर करवाने के लिए। these two powers are equal so we can compare their exponents। so it's a n minus 1 equal to 0। so n equal to 1 is the answer। अगर आपने मुझे सही क्वेश्चन लिखवाया है तो